ब्रेकिंग फर्स्ट में सबसे पहले बात वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग की, जहां व्हाइट हाउस के पत्रकारों के डिनर में फायरिंग हुई। होटल में पत्रकारों के लिए आयोजित डिनर में मौजूद ट्रंप भी थे। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने शूटर को हिरासत में ले लिया। हिल्टन होटल को खाली करा दिया गया। होटल में करीबन 6 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई और ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये जो तस्वीरें सामने आई, भयावह तस्वीर, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सुरक्षा चूक देखी जा रही है। FBI की तरफ से जानकारी दी गई कि ट्रंप, मेलानिया सभी लोग सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस बॉलरूम में मौजूद थे, उस बॉलरूम के ठीक बाहर ये फायरिंग हुई है। अब इस पूरी घटनाक्रम को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। लेकिन ये जहां पर आयोजित किया जा रहा था, वहां पर ठीक बाहर, बॉलरूम के बाहर एक फायरिंग की आवाज सुनाई दी और 6 से 8 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी। करीबन 6 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद दहशत का माहौल फैल गया। इसके बाद तुरंत ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स अंदर आए, ट्रंप को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जो कि उस डिनर में ही मौजूद थे, उन्हें भी सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। और पूरा बॉलरूम, जिसके अंदर कई जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट भी उस बॉलरूम में मौजूद थे, वो सभी, उन सभी को कहा गया कि आप टेबल के नीचे छुप कर बैठ जाइए, क्योंकि यदि कोई फायरिंग होती है, कोई बुलेट बॉलरूम के अंदर आती है, किसी को खतरा ना हो, किसी की जान को खतरा ना हो। ये तस्वीर देखी गई व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। बॉलरूम के अंदर ये फायरिंग की गई है। वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन हिल्टन होटल है, जहां पे हर साल व्हाइट हाउस की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया जाता है। तो वॉशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की डिनर पार्टी चल रही थी। और इस हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस खुद इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। हालांकि दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इस सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की, वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। फायरिंग के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग ट्रंप के सामने ही हुई। ट्रंप मंच पर बैठे हुए थे और अचानक ही फायरिंग होने लगी। सुरक्षाकर्मी ट्रंप को घेर लेते हैं, कई लोग टेबल के नीचे छिप जाते हैं और कई लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीक्रेट सर्विस के जवानों की तारीफ की। Guards a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the D.C. police, and we just spoke with the mayor. And when we're finished, the
police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to, and you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, independents, conservatives, liberals, and progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of very quickly, rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out. You've been very responsible. So Todd Blanche, I'd like to say a few words, and then we're going to have cash. And then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. So I want to thank everybody very much. And Todd Blanche, please. Thank you very much, Mr. President. Tonight you saw the very worst and the very best of this country. You saw the very worst by the actions of that coward that the president just talked about. But you also saw the very best because you saw law enforcement do exactly what they're supposed to do. And you'll see the videos come out, I expect, very shortly, and you'll see law enforcement do exactly what we want them to do. And so I echo what what President Trump just said, that we are extraordinarily grateful and appreciative of the men and women of law enforcement that did their jobs tonight, including one who was injured. This investigation is ongoing. I expect you will see charges filed shortly. The charges should be self-evident given the conduct, but as you'll hear, there will be multiple charges surrounding the shooting, around the possession of firearms, and anything else that we can get on this guy.
The investigation is obviously ongoing and just started. There is federal law enforcement already working on search warrants and doing their job, and I don't want to get ahead of them and don't want to get ahead of the work that they're doing even as we speak. Director Patel and I were just on. तो ट्रंप की तरफ से देखिए क्या कुछ मुख्य मुद्दे कहे गए हैं, जानकारी दी गई है, आपको वो समझा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बाद में संबोधित किया गया है देश की जनता को, और उसके बाद उन्होंने जानकारी दी है कि सुरक्षा कर्मियों ने, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और इसीलिए उसकी जान बच गई। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम करते हुए मेरी भी जान बचाई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस हिल्टन होटल के बॉलरूम में ये एनुअल डिनर, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर आयोजित किया जाता है, वहां पर खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वो ना तो बुलेट प्रूफ रूम है, ना ही वहां पे सिक्योरिटी के इतने सारे कड़े घेरे हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि वो भी आपको हम समझाएंगे कि जो हिल्टन होटल में, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर आयोजित किया जाता है, वहां जब डिनर चल रहा होता है तो बाहर के एरिया में आम लोगों की, आम नागरिकों की भी एंट्री अलाउड होती है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे में इस पूरी पिक्चर को आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संबोधित किया गया, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि अब इस डिनर को दोबारा से रीस्केड्यूल किया जाएगा, यानी कि दोबारा से आयोजित किया जाएगा। सभी कैबिनेट के सदस्य, उपराष्ट्रपति, मैं, फर्स्ट लेडी यानी कि मेलानिया ट्रंप, ये सभी सुरक्षित हैं। लेकिन जो भी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों की तरफ से अब जो प्रोटोकॉल है उसके तहत अब इस डिनर को दोबारा से आयोजित किया जाएगा। सभी को सुरक्षित यहां से निकाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम किसी को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने संविधान पर इस तरीके से हमला नहीं करने देंगे। अब चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आप सीसीटीवी फुटेज की देख रहे हैं। वॉशिंगटन हिल्टन होटल के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये जानकारी सामने आई है कि जो व्यक्ति, जिस पॉसिबल असैसिन की तरफ से, जैसा कि ट्रंप की तरफ से भी कहा गया, जो हमला करने